all offline and offline and on. Yes, ma'am. I think some technical glitch is also again raising over there. Is there anybody to with? Ma'am is there. Hello. Yes, sir. Just a minute. No issues. Yeah. Yeah. I think when the live streaming started, she got dropped off. Yeah. Ma'am, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. Kumud ma'am, just go somewhere there. Is there any problem? सर जब तक और इतिहास जब तक आपका खत्म ना हो, आपके सामने 2-3 बातें हमारे शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी की आपके सामने में रखूं. Are you joined, ma'am? Thakare ma'am. तो हमारे विश्वविद्यालय में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय जो हमारा है यहाँ का, और हमारी शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी भी है, तो उसमें जब हम काम करते हैं तो आपके सामने मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय के बारे में भी आपके सामने कुछ मैं विचार रखूंगी. जब तक हमारे एंकर यहाँ पे कुछ शायद डिलीट करो, किसी को ज्यादा ये हो रहा है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो रहा है, उनको तो जस्ट आई नो दैट एवरी, तो भी थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्स आप सबका लग रहा है मुझे. तो सर भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हमारी भारत माता का, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का, हमारी परंपराओं का, और उनके जरिए यदि हम स्पष्ट रूप से वो छात्राओं के सामने यदि ध्यान से उनके समझने के हेतु यदि हम बात करते हैं तो श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष जी है वो है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख. वो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री भी हो चुके हैं. Madam, I have joined. Yes. Have you joined? Please start, ma'am. Please start. Technical glitch. Sorry about that. So, good morning, one and all. At the outset, I pay my humble tributes to late Dr. Panjabrao Deshmukh, alias Bhausaheb Deshmukh, a great educationist, first agriculture minister, and the founder president of our society, Shri Shivaji Education Society, Amravati, and his better half, late Matoshree Vimalabai Deshmukh. Today, we have organized one-day national seminar on the topic Discovery of Bharat through hybrid mode. As we all know that Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati has introduced CBCS system this academic year and incorporated elective subject courses in various programs to inculcate the knowledge of Bharat Varsha, its culture, tradition, history, science, and religion among students under 5 modules that is in the syllabus. And to widen the knowledge and concept of Bharat Varsha, today we have invited 2 great personalities from this field, founder of Bharat Gyan, Dr. D.K. Hari, and his better half, Dr. D.K. Hemlata Hari. Sir and Madam, we really feel privileged to have you both with us online. Our students of first year are gathered here in our seminar hall. Many students have joined online also. As a coordinator, IQAC, first of all, on behalf of IQAC, I welcome our 2 speakers, notable speakers, and our principal madam, who is the chairperson of this program today. Wholeheartedly welcome them. All the respected staff members of senior college, junior college, SSCVC, non-teaching staff members, and my dear students of humanities, science, home science, and commerce faculty, I welcome you all again. Now I would like to begin with few words about our institute, a brief introduction of our guests and our respected principal, who is the chairperson of this program. Few words about our college, sir, madam.
Actually, the origins of Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya Amravati can be traced to the Rural Institute set up in 1956 in pursuance of the Radhakrishnan Report on Rural Higher Education. The institute used to offer 3 years post-matric National Diploma in Rural Services, that is NDRS, equivalent to the first degree course of traditional universities. The course was designed to train rural youth in the effective implementation of rural reconstruction program. In 1971, the college got itself affiliated to Nagpur University as College of Rural Services, offering 3-year degree course in rural services, and in 1983 to Amravati University. Since then, the college introduced BA 3 years degree course, BSc in Home Science, and 1-year PG Diploma in Business Management, that is DBM. In 1991, the college acquired its present name, 99, as tribute to the memory of the inspiring personality, Srimati Vimalabai Deshmukh. Now, the college is a grant in an institution with DBM as self-financing course. The college has UGC recognition with 2F to 12B since November 1992 and is located in an urban area. I think this much is enough. And now the particular college is affiliated or is under the Shri Shivaji Education Society, established by Dr. Punjabrao alias Bahusaheb Deshmukh in 1932. Now, I would like to introduce to all the audiences. Audiences are guests. They have given us their profile together. So I will read it out as they have given it in their website. Dr. D.K. Hari and Dr. Hema Hari, this couple who have dedicated themselves to the compiling and disseminating a factual in the narrative of Indian civilization knowledge to the youth of the land in today's parlance. Together they conceptualized Bharat Gyan 25 years ago with a mission to raise awareness about the knowledge, practices and global connects of the Indian civilization over millennia. Dr. D.K. Hari, born and living in Chennai, hails from a traditional family from Kanchipuram, engaged in community service in the field of healthcare, education and culture in Chennai. He had his schooling in Rishi Valley, then graduated from Madras Christian College and did his post-graduation in business administration from PSG College of Technology. Coimbatore post, which he had a 20 years long successful career in family business and as a management professional. Dr. D.K. Hema Hari ma'am was born in Mysuru and grew up in Mumbai. It means you have some connection with Maharashtra, madam. She double graduated in physics and in computer technology from Bombay University. Her 20 years long career with multinationals in information technology was focused mainly on nurturing new technologies and managing innovation. She has trained in vocal Carnatic music under eminent musicians such as Padma Vibhushan Sangita Kalanidhi, Srimati D.K. Pattamal, Acharya Chudamani, Shri A.S. Pancha Kesa Ayyar and Sangita Kala Acharya Srimati Alamelu Mani. Their areas of work. They started Bharat Gyan, particularly I would stress on this, after a stint of 20 years of successful careers in their respective professions of IT and management, with extensive global travel to explore other cultures. Both husband and wife boldly left their lucrative professional careers to compile, collate, and showcase the knowledge of the Indian civilization as an Indic narrative. With factual content on over 108 different subjects on aspects of the Indian civilization across millennia compiled over the last 25 years, the Hari couple have evolved into subject matter experts on the overall understanding of the Indian civilization across ages to the present. Their USP is the range and depth of data on the Indian civilization along with the design and the Indian ethos behind it, which appeals to all age groups and segments. They were both awarded honorary doctorates by Sri Sri University, Odisha for sustained research and compilation in the field of Indian civilization knowledge for over 20 years. As author, educator, and speaker, they have 100 books and 65 e-books to their credit, 5 documentaries, 500 short films, 500 blog articles. They are spreading
busy in spreading this knowledge via multimedia talks, over 400 and online courses for universities and special interest group. Actually, there is no end to your contribution towards society, sir and madam, but we have a time constraint and we are so proud to have both of you over here. So thank you so much for being over here. Now, a few words about our respected principal, madam. Thank you. She Thank is you. no less. Just a minute. Yeah. Okay. Okay. She is no less than a big personality. Actually, she is also a multifaceted personality. We have personality with beauty and brain together. She is BSc Electronics, MA English, and PhD. She has 30 years of academic and administrative experience. She has also worked as a dean, academic counselor, and senator in Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. She is a member of General Council of NAC, Executive Committee of NAC, member of Standing Committee of NAC, and Policy Making Committees of NAC, and so on. She has been nominated on various committees like SET ACT Observer, UGC HRDC by UGC, Autonomous College, Governing Body, External Peer Review Committee for the Selection of Principal in India. She has visited various states for assessment and accreditation as NAC peer team member and member coordinator in the affiliated colleges. She has also an innate experience of working with international bodies through participation in workshops, seminars, and conferences held outside the country. She has to her credit 7 books, 54 research papers, and her various articles are published in magazines and newspaper. Most notable is that she has played lead role in first Marathi historical movie Rajmata Jijau in 2011. Also, she has played role in Marathi movie Gyan Gangecha Bhagirath on life of Dr. Punjabrao Deshmukh. She has received prestigious awards for her educational, cultural, social, and research contribution in society at state, national, and international level. In fact, I have a long script of her CV also with me, but due to again repeating this, that time constraint, I have to wind it up. Yeah. So thank you so much, ma'am. Just we are waiting for very vibrant personalities sitting in front of all of us. Undoubtedly. Welcome, sir, for your very now yes, my humble yes. request. Thank you, ma'am. Now my humble request to Honorable. I don't know who will going to start out of you, Dr. D.K. Hari sir or ma'am D.K. Hari sir. Okay, to deliver his address, and we are very eager to for your deliberation. So you can, I can say you can start now. Thank you so much, ma'am, for a very kind and nice long introduction to us and to Principal ma'am. Thank you, and we'd like to thank Madam Principal Smita Deshmukh ji for inviting us for this event. It's our honor really for such an illustrious institution, started by such an illustrious personality, and spreading knowledge to the whole Maharashtra region, not just one city of Ahmedabad, the whole region. So that's such a noble task. Yeah. So all the rural youth, it's something very nice. Instantly, I had the opportunity to come and speak at a Navratri event, major Navratri event of almost 20 years back in Amravati. So I had the good opportunity to visit the beautiful town, but 2 decades ago. And I've also had the good fortune of interacting with Principal Dr. Smita Deshmukh ma'am in an academic board meeting about a year back. And we did discuss about Indian knowledge then. And it's very kind of her to recall, remember, and invite us for this event. Really appreciate it, ma'am. Thank you. Now, getting on to the subject of Bharata Varsha, the topic of the day. So when she mentioned the word Bharata Varsha, I said, yes, it will be a pleasure to speak on such a nice subject. Now, over the next probably 30 minutes or so, we look at the idea of what is this name Bharata Varsha? Why do we call ourselves Bharata Varsha? There are 2 components, Bharata and Varsha. What do they 2 mean? And why are they 2 coming together? This is a fundamental understanding. Before we get into knowing about
Indian knowledge system, and all such other aspects, I think we need to have a basic background, a fundamental idea, foundation of what are these two names, what do they mean to us, how do these two names come about, and why do we use these two names? Because everything in our knowledge system that we have emanates, flows from here. And only if you know she mentioned about the word Ganga in the film. So this is the root. So the word Ganga itself means what? A perennial flow. Gagan se Gagan. It's a continuous cyclical flow of the environment. So that's Ganga. So this is actually, Bharat is all about Gyan Ganga. So that idea of what is it is what we will see over the next 20 minutes, which Dr. Hema will make a brief presentation and walk us through. Can we get Dr. Thakare, we need to screen share? Screen share, we need Yes. co-host or screen share permission, please. Yeah, screen share. Yeah. We'll be showing a couple of films and a few multimedia slides too as we talk along. Give me a minute. No problem. No problem. Yeah. So meanwhile, we'll look at the, as I said, as we're getting the screen share permission, just take two words. We use the word Bharatha. Where do we get the word Bharatha? Why do we use the word Bharatha? If you look at our Indian constitution, we give ourselves, our country, our civilization, our land, two names. Bharat, that is India. So we, at the constitutional level itself, recognize two names to this glorious land of ours. But how do these two names come about? What's the source of these two names? And the third is Varsha. Why do we call it Varsha? Is also, we'll see that. Have we got that? Have we got the permission? Yeah, they're still. Okay, fine. Okay, fine. So please go ahead. No problem. So you want to speak? Normally, when we ask anybody in this land, why are we called Bharat? They will usually say, we are called Bharat because of Shakuntala's son, Shakuntala and Dushyant's son, Bharat. So from that name of that prince, we are called Bharat, after the name Bharat. But the question then, why was he named Bharat? So if you look at it, everything in this land has meanings. The scientific meaning. You can share your screen. Yes, we are doing that, ma'am. So everything in this land, if you look at it, so many names, and not only our name of our land, names of regions close to us, which are also part of this civilization. All these names have a meaning. And today we'll see some of these meanings. We'll start with Bharat and then look at how Bharat is Bharat Varsha. Why do you call it Varsha? And for that, we will play a film initially. And just one moment. It's a very good thing that we have started with the Bharat. Can you see and hear? Yes, ma'am. Okay. Can you bring their faces? Yeah, just one. Just one moment. We'll just adjusting the screen for a moment so we can see parallelly. We can see both. Yes, actually, it is visible. Words are there and yes. We can see both screens. Yes. This land is called India, that is Bharat. Why does this थोड़ा country हिंदी में हो जाए called सर बीच में Why is Avashya. India called Bharat? The word Bharat etymologically stands for Bha, that is light, the spreading of light, the knowledge which comes with the spreading of light, and Rat, one who is a connoisseur of knowledge. The spread of this land is also expressed in the literature of the land. In the Rig Veda, Rishi Vishwamitra
describes the people living in this land as Bharatam Janam. The word Janam means people, citizens. Bharat is the land where people relish knowledge. तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो भारत शब्द का अर्थ ही यही है कि लोग जो भा में रस लेते हैं, भा यानी कि ज्ञान। इसलिए भास्कर, हम सूरज को क्या बोलते हैं? भास्कर के नाम से जानते हैं ना। पेपर भी है दैनिक भास्कर, भास्कर यानी कि सूरज, सूर्य। तो क्यों उसको भास्कर कहते हैं? क्योंकि वो भा देता है। भा यानी कि लाइट, ग्लो, वो जो शाइन जो आती है ना। तो इसीलिए भानु नाम की जो लड़कियां भी है, वो नाम भानु जो है वो सूर्य को दोहराता है। तो भारत, तो ज्ञान जो लाइट जो आती है, तो वो भा, उसका अर्थ एक तरफ लाइट है और दूसरी तरफ ज्ञान भी दिखाता है। तो भारत जो ज्ञान की खोज में उनको बहुत रस लेते थे, इसीलिए रथ का अर्थ है जो रस लेते हैं। रथी आप देखेंगे तो मनमद, जो गॉड ऑफ लव बोलते हैं ना, तो मनमद, तो मदन, मनमदा, मोहन। तो इनका जो स्पाउस है उनको रति, कामदेव, कामदेव और रति, ये दोनों कपल है ना। तो कामदेव जो गॉड ऑफ लव है, तो उनकी स्पाउस है रति देवी। तो रति मतलब जो रस लेना है। तो भारत, relish, it is, the meaning is relish. तो भारत is a land which relishes knowledge. इसीलिए हम इंडियन, इस अभी देखिए आप, इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्यों महत्व दे रहे हैं हम? क्योंकि ये भूमि है, ज्ञान भूमि, और ज्ञान गंगा हर वक्त इसका प्रवाह रहता ही है। तो इसीलिए ये नॉलेज को हमें छोड़ना नहीं है। तो इसको भी साथ साथ, जब हम मॉडर्न ज्ञान, मॉडर्न स्कूलिंग और वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसको भी, इस गंगा को भी साथ साथ ले जाना है। इसीलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भूमि है, ज्ञान भूमि। कैन वी सी मेनी कंट्रीज इस पृथ्वी में, विश्व में उनका नाम देते हैं, लेकिन किसी समुदाय या किसी देश, सभ्यता, उनका नाम ज्ञान के नहीं देते हैं। Look, that's how we call ourselves Bharat, a land which relishes knowledge, and the people in it, जो हम लोग है ना, भारतीय, जो हम सब knowledge को अनुभव लेते हैं। That's the beauty of it. No other country in the world, no other civilization in the world calls himself a land of knowledge, a land of education, a land where people enjoy knowledge. That is our beauty. That is the proud factor of being a Bharatiya. Are you all not proud of being a Bharatiya? Because all of us are people who relish knowledge. That is the beauty of it. Isn't it amazing? और ये ही नहीं कि सिर्फ हमें या ज्ञान के रस लेने वाले लोग ऐसे हमने हमको नाम दिया। आप पास में जो सिविलाइजेशन है वो है चाइना, जो बड़ा सिविलाइजेशन है, पुराना सिविलाइजेशन, equally ancient, तो equally वो है big civilization. चीन की सभ्यता। तो उनके मन में भी भारत के बारे में कैसा विचार था, वो अभी हम देखेंगे। उनका एक बहुत पुराना कहावत है, उनको हम 1 मिनट उनको देखेंगे। How they look at the world as 5 different civilizations of the world they see. तो चीन के लोगों ने क्या किया, दुनिया के सारे सभ्यता को विश्व में ऐसे 5 तरह के हिस्से में उनको बांटा और बोले कि 5 किंग, 1 moment, just a second, I'm not sharing, sorry, just 1 minute. तो वो बोले कि विश्व के सभी पुराने सभ्यताओं को 5 तरीके के लोगों के रूप में उनको बांटा। बोले चाइना के लोग हैं किंग ऑफ ह्यूमंस, और क्योंकि वो आज्ञा का पालन करते हैं। और तुर्क हैं किंग ऑफ लायंस, क्योंकि बहुत वीर हैं, शेर हैं, शेरों के राजा।
किंग ऑफ पर्शिया, जो ईरान वो सब जगह है, तो वो है राजाओं के राजा, क्योंकि उनकी ambient voice. वो पर्शिया राजाओं के राजा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा फर्टाइल लैंड्स और वेल्थ, सोना, वो सब बहुत रिचेस थे। और रोम यानी कि इटली, ये किंग ऑफ मेन, क्योंकि बहुत सुंदर थे, handsome। और इंडिया को देखा है, वो लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ विजडम। तो चीन सभ्यता भी यही बोलती है कि इंडियंस, भारतीय सभ्यता ज्ञान के राजा है। तो किंग ऑफ विजडम एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड फर्स्ट नेशन टू कल्टिवेट साइंस। तो हम सिर्फ भारत को एक स्पिरिचुअल देश के रूप से हम लोग भारत को सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल से देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, साइंस भी इधर, विज्ञान भी इधर बहुत प्रचलित था, और चीन के लोग ही बोल रहे हैं फर्स्ट नेशन टू कल्टिवेट साइंसेस एज वेल। सो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत प्रचलित थे। So we are not calling ourselves Bharatiya alone, which we are doing. The neighboring civilizations also calling us land of knowledge. So look at this. So two big civilizations, ourselves and our friends across the Himalayas, call ourselves as land of knowledge. That's the beauty of it. So that is the source of the word, the idea, the concept of Bharat. Let's look at one more concept. तो ये भारत इंडिया कैसे बना फिर? भारत से इंडिया, अभी हम इंडिया दो नाम से जानते हैं ना, तो इंडिया कैसे बना भारत से? तो एक छोटा फिल्म देखेंगे इधर, 1 मिनट का फिल्म। How and when did Bharat get the name India? In the Persian language, the syllable sa was pronounced as her. So the Persians and Arabs who came east towards the river Sindhu called the land around and beyond the river Sindhu as Hind. From this came Hindu, Hindustan. As the word Hind traveled west towards Greece from Persia, in the Greek language, H was interchangeable with I, thus Hind became Ind, Inde. Greek scholars of 200 BCE, Hutinga and Ptolemy, both show India as Indi in their maps. Thereafter, the term Indi, Inde, India came to be. So we now see how the terms itself come about. So when you say India, see, Bharat is a term we have called ourselves. Whereas the term India, Hindu, Hindi, Hindustan, all that comes from how our neighbors call us. See here, so we have the Sindhu Nadi in the northwest of India. तो आप सब जानते हैं ना कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, तो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। तो पंजाब, सिंध, तो ये This is in our national anthem. तो ये सिंधु नदी, अभी जो लोग यहाँ से आ रहे थे, जो लोग भारत को वेस्ट में से देख रहे थे, Not now, but about 4,000, 5,000 years back. Very ancient times. This is even the pre-Islamic times. तो उनके दृश्य में ये सिंधु नदी के आसपास के लोग, जो सभ्यता थी, सिंधु नदी और इसके ईस्ट में जो सभ्यता है, वो सबको वो लोग सिंध के नाम से उन्होंने नाम दिया। और वो सिंध पर्शियन लैंग्वेज, उनकी भाषा में स को ह भी बोल सकते थे, तो स सिंध के बजाय हिंद बोल रहे थे। तो ये सब जगह हिंदुस्तान बन गया। और उनके बाद उनके जो नेबर्स थे वो है ग्रीक थे, वो हिंद को ह साउंड से ई बना दिया, तो इंड हो गया, और इंड से इंडिया आ गया। और एक और हमने तो देखा कि भारत लाइट के रूप से भारत है। इसमें और दो एस्पेक्ट भी हैं। भारत बनता है भर्तियों से भी, भर्तियों यानी कि मेटलर्जी, बर्तन बनाने का जो स्किल है, कौशल है, तो
तो भर्तियों मेटलर्जी, तो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो ये सिविलाइजेशन मेटलर्जी में काफी कौशल था। और ऑल द ट्रेड, जो इनका ट्रेड व्यापार था, वो सब मेटल्स के ऊपर काफी बहुत था। देयर वाज अ टिन रूट जो भारत और ईरान, पर्शिया, उस सबको कनेक्ट कर रहा था। तो ये सब की वजह से भारत का नाम भर्तियों से भी जुड़ता है। न केवल ज्ञान के लिए भारत है, किंतु मेटलर्जी के लिए भी ये भारत है। Because the metal also shines. Look at the idea of glowing, shining, like how the sun ray shines, knowledge glows, metal also glows. Look at the connect there. और तीसरी एंगल से देखेंगे तो भारत जो है ये इक्वेटर के पास है, तो सचमुच सन का वो भा जो है, लाइट, हीट, वो सब भारत के ऊपर बहुत अच्छी से यहाँ पर गिरता है। और इसका ये सभ्यता ने काफी लाभ उठाया, क्योंकि न केवल सनलाइट मिल रहा था, इस सभ्यता को अच्छा बारिश भी मिल रहा था। और उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो सनशाइन और बारिश दोनों अच्छी काफी रूप से इनफ सनलाइट एंड सन रेन विच दे पुट इट टू वेरी गुड यूज, इसीलिए काफी प्रोडक्शन बना, यहाँ से काफी ट्रेड हुआ, तो ये प्रॉस्परस बना। Look at this, in this whole region of equator to the Tropic of Cancer, Amravati is here, isn't it? So in tropical, look at this area. This landmass is not usable at all because of Sahara Desert. There is not much landmass here at all. So the only, and here also landmass is less. So the only big landmass in this belt is Bharat. So it gets sunshine and rainfall. Dono. So we are blessed that way is what we will see. So look at this. Here is Sahara Desert. So not, and here is Arabia Desert. So civilization growth is not possible. Here there is sea. Civilization growth is not sufficient. Here again. So this is the land of Bharat where you have civilization. Look at the beauty of it. We are geographically placed right. That is the beauty of our land, Bharat. So that is the knowledge of it also we had. So we are like no other land. We enjoy sunshine, we also enjoy and we relish knowledge that goes with it. So if you see that Bharat as well, etymologically is our name. Literature also we have seen. ऋग्वेदा में भी भारत का नाम है। हम लोगों को भारतीय के नाम से मेंशन किया है। We saw that in the film. Then we also saw how in history different kings are called Bharat. Starting from Jada Bharata, various kings in Purana have been called Bharat. So that is there. Then she showed you about metallurgy. Then we showed you about climate, how it is salubrious climate to have the name Bharat. Then the people are Bharatiya, religious knowledge. So look at the name that we have, Bharat. It's a multi-tiered, multi-layered, multi-meaning name. Can we think of a land that is so beautifully, so aptly, so correctly named himself? Every other country is not named like this. Every other civilization is not named like this. Do you know why China gets the name Chin? Any idea? Chin means land to the east. East of what? East of Bharat. So for them, they are placing their land east based on Bharat. So their contour itself is based on us. You see, if you take the name of England, because हम तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इंग्लैंड तो डेनमार्क और इंग्लैंड द्वीप के बीच में एक छोटा सा द्वीप इंग्लिश था, INGLS था, इंग्लिश था। सो वो आने वाले रास्ते में एक छोटा सा द्वीप है, वहां वो बोट्स आने जाने नॉर्थ सी में, इसलिए उस नाम उन्होंने लिया। लेकिन वो सब उस तरफ नाम लेते, लेकिन हम तो इतने रूप से हम नाम लेते हैं भारत। Look at the beauty of our civilization. Now, having said this, we also spoke about climate. And what the topic of the day given for this conference is Bharata Varsha. Now we look at the idea of Varsha. Now, having said this,
How many Varsha? I'm sure there are quite a few girls probably in this group or your friends or in family who are called Varsha. Why do they get the name Varsha? Why are they called Varsha or Varshini? What do we call one year as? Of course, we use the word Sal, but we also use the word for year as what? Ek Varsha. Isn't it? What do we call our land? We call our land as Bharata Varsha. Isn't it? So then what do we call rains? That comes to us every year in Amravati. By June 20th, we start getting rains. Right? Every year around June 20, we start getting rains. Why do we get rains? We say Bombay, you get rains by about June 10th, 11th, 12th. Amravati 3-5 days later. Why do you get those rains that correctly every year? Is there a calendar in the sky? Why do we call rains as Varsha, land as Bharata Varsha, and year also as Varsha? Let's see the connect now. I think the host has disabled our screen sharing. Can you please give us screen sharing, please? I'm going to show you 2 more 1-minute films. Yes, sir. Are you there? We need screen sharing purpose. Yeah. Thank you. Yes, sir. So look at that term. So we have one name which Varsha, which applies to 3 perspectives: rain, land, and year. So there's an intrinsic connect to this. That is what we will see over the next 1 minute. Yes, ma'am. Yeah. It's not calm now. Thank you. Have you ever wondered why we call our land as Bharata Varsha? We call rain as Varsha. We call a year also as Varsha. What is the connect between these 3 Varsha? In this whole world, after the Amazon forests, the one single landmass that gets the highest rainfall consistently year after year is Bharat Varsha, which is India. The onset of monsoon rains, Varsha, which came the same time every year, marked a year for the farmers in the agrarian society of Bharath. Hence, Varsha also came to denote the concept of a year. Thus, we see a distinct connection between rain, year and land. Rain is Varsha, year is also Varsha. The land over which this rain Varsha rained prosperity year on year is also Bharat Varsha. तो अगर आप देखेंगे, you're all part of rural university, and I'm so happy when Dr. Thakare was introducing, she said you're doing BSc, you have come up with new course itself for rural, based on rural subjects. It was very, very heartening, because if you look at it, ये नाम भारत वर्ष ही रूरल से ही जुड़ा है. ये वर्ष जो है, पहले इसका एसोसिएशन है बारिश से, बारिश के साथ, जो हर वर्ष जब बरसता है ना, तो ये लोग ने देखा, हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि ये बारिश जो आती है हर समय वही समय पे आती है, वही गैप में आती है. तो 2 बारिश के समय, 2 बारिश के बीच का समय को क्या किया उन्होंने, 1 वर्ष
वर्षा है, 2 वर्ष के बीच का समय को वर्ष के नाम से दिया। और यही नहीं, जो भूमि है, जो पृथ्वी का वो भूमि का भाग है जहां पर ऐसे वर्षा हर वर्ष के समय में वर्षा होती है, तो वो भूमि को भी वर्ष के नाम से कहलाने लगे। तो इसीलिए वर्षा जो आती है और समय जो 2 वर्षा के बीच में है वो है वर्ष, और जो भूमि पे ऐसी वर्षा आती है जो समय समय पर आती है तो उसको भी भारतवर्ष। इसीलिए हम अफगानिस्तान से लेके हम बर्मा तक ये सब भारतवर्ष का ही भाग था। ये सब एक संगठित लैंड भूमि का एक अंश था। So the geographical Indian subcontinent is called Bharatavarsha. That's the beauty of which includes, as she said, from Afghanistan to Pakistan to what is India to Bangladesh, Nepal, Bhutan, and some parts of western, northwestern parts of Burma. So it's whole of it is called up to the Arakan Yoma, Pegu Yoma, then Sri Lanka, Andaman Nicobar, all this called Bharatavarsha because we get one common rain. Now, having said this, तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन, ये विचार आया होगा कि इतने बड़े पृथ्वी में सिर्फ ये छोटी सी जगह जो है भारतवर्ष, सिर्फ यही क्यों, यहाँ क्यों वर्षा ऐसे एक वर्ष में आ रही है? करेक्ट, हर एक वर्ष में वर्षा आती है, सिर्फ यही क्यों आती है? तो इसका हम कारण देखेंगे। See, because we take England, for example, a small island. They get rains for about 7-8 months a year, bit rain. Whereas India, we have a season for rain. But Varsha ke liye. And when do you start getting rain in interior Maharashtra? By June 15, June 17, June 20. But every year you get rain on June 15 to 20. The rain starts and goes on for next 2 months, 3 months. 1 minute सोच लीजिए, क्या आकाश में कोई कैलेंडर है क्या कि जून 15 हो गया तो बारिश प्रारंभ होना है, जून 10 हो गया तो क्या बंबई और बारिश प्रारंभ होना है, और जून 12 हो गया तो पुणे में बारिश प्रारंभ होना है? कहाँ है ये कैलेंडर? हर साल कैसा ये मुमकिन है? इसके बारे में एक और फिल्म देखेंगे। 1 मिनट प्लीज, गिव अस होस्ट फैसिलिटीज प्लीज। It's there. No, it's there. Please go host facilities. Yeah, it's there. We'll see. Why do we get this Varsha every year? We'll see. It's again a 1 minute film. ये राग को भी आप इसका भी रस ले लीजिए क्योंकि ये मलहर है जो बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। Why does it rain every year on this land without fail? What are the forces of nature that bring this rain to this land every year? In the month of May, there is summer in the northern hemisphere. In the interiors of India, temperatures soar to 45 degrees centigrade and even more. In Sahara Desert, the temperature range is between 45 degrees to 50 degrees centigrade. This extreme heat causes low pressure. During this time, it is winter in the southern hemisphere. The Great Australian Desert is cooler and hence high pressure prevails there. It is well known that winds always move from high pressure to low pressure. So the cool winds move from central Australia in a northwesterly direction towards the hot Sahara Desert. As the winds cross the equator, they turn right in consonance with nature due to the Earth's spin, which is explained as Farrell's law. Picking up moisture along the way from the Indian Ocean, the moisture-laden winds blow in towards India, thereby bestowing monsoon rains all over the land. So look at the beauty of it. So getting
See I'm sure all of you have heard about pressure and all that, wind pressure. So from Australia to Sahara, it's actually going. When across the equator, India is at the right place geographically to pull the winds. Look at the beauty of it. Now she'll show you some example. So जैसे हमने देखा तो यहाँ पर मई के मंथ में यहाँ ठंड है, क्योंकि उल्टा है, जब मई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, तो यहाँ पर ठंड रहती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो सारी विंड जो है यहाँ से शुरू करके निकलती है, और करने के बाद जब ये इक्वेटर पे आती है, क्या होता है, ये अर्थ जो है ना गोल है और भूगोल है, भूमि गोल है और ये घूम रही है, तो जैसे वो घूमती है तो इस भाग से जो आ रही है वो हवा ऐसे ही सहारा की ओर जाने के बजाय वो स्पिन के साथ वो घूमने के साथ वो उसको खींच लेती है और भारत की ओर ले आती है। तो ये हवा आप देखिए ना, यहाँ से प्रारंभ होके सारे इंडियन ओशन और यहाँ से इतना सारा पानी उठाकर वो ले आ रही है, water molecules it picks up to make the clouds, और इतने सारे क्लाउड्स आ रहे हैं, और लेकिन यहाँ जाने के बजाय यहाँ से भारत की ओर मुड़ जाती है और सारा पानी भारत पे आता है। शायद यही कारण है क्योंकि ये डेजर्ट भी है, क्योंकि ये पानी इधर जाता ही नहीं है, ये पानी सारा भारत में आ जाता है। Look at this. So you are Punya Bhumi, you are placed geographically right to receive the rains immediately after your summer. तो अगर भारत यहाँ नहीं होता, कहीं और इधर उधर होता ना, तो ये बारिश हमें नहीं मिलती। So तो हमें भी मई में इतना धूप समर होगा और उसके बाद हमें बारिश नहीं मिलेगा, तो हम भी डेजर्ट ही हो जाते थे, लेकिन भारत इधर है, इसीलिए ये ही है पुण्य, हम भारत को पुण्य भूमि कहते हैं। क्यों? ये अपना लक है जो इधर आके अपना सीधा पहला जब मुड़ता है तो पहले भारत में आके आता है, गिरता है। लेकिन भारत में भी क्यों गिरता है? अगर यहाँ भारत में पुण्य के साइंस और 2-3 चीज हैं, अगर वो नहीं होते तो भारत में भी नहीं गिरता ये पानी, और वो चीज क्या है वो देखेंगे अब। We'll see that. How many of you know about the Ghats of Western Maharashtra? What is it called? What is the Ghats of Western Maharashtra called? Anybody think of it? What do you call the Western Ghats in the local language? So we call this Western Ghats. यहाँ के जो पहाड़ियां हैं इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। यहाँ हिमालय है और यहाँ पर विंध्या है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जब ये बारिश के साथ जो मेघ आ रहे हैं, पानी, इतना पानी के साथ, तो सडनली ये घाट सह्याद्री से पहले टकराते हैं और सारा पानी ये साइड गिरता है। तो यहाँ पर मुंबई और ऑल द कोस्टर्न, मलबार, केरला, गोवा, सब में इतना, कोंकण में सारा पानी आता है। फिर ये थोड़ा लाइट होता है, फिर ऊपर उठ के इसको क्रॉस करके अंदर आता है, तो पूना और बाकी के सारे अमरावती, यहाँ पर औरंगाबाद, सब कुछ यहाँ मिलता है। तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, यही है इंडियन नॉलेज, जो हम इंडियन नॉलेज बोलते हैं। देखिए हमने क्या नाम दिया है इसको, हम सह्याद्री, आप लोग मराठी में इसको सह्याद्री बोलते होंगे, आप इसको वेस्टर्न घाट नहीं बोलते हैं ना, तो लोकल लैंग्वेज में आप इसको सह्याद्री बोलेंगे, इसीलिए सह्याद्री एक्सप्रेस भी है गाड़ी का नाम। तो सह्याद्री क्यों नाम पड़ा? अगर एक और बात, एक और स्टेप से अगर सोचेंगे तो देखेंगे, सह्याद्री, अद्री का अर्थ है माउंटेन, तो सहायद्री, तो सहायद्री, ये जो अद्री है जो हमारी सहायता करती है, बारिश के लिए हमारी सहायता के लिए है ये अद्री, इसीलिए इसको सह्याद्री बोलते हैं। तो इसमें सारा ज्योग्राफी आप जो स्कूल में वेस्टर्न एजुकेशन में किताब में रख के आप फोटो देख के, या अगर जैसे हमने वीडियो बताया आप ऐसे देख रहे हैं, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या है, एक नाम से ही है, 2 नाम से ही है। वर्षा का अर्थ है अभी जो बार बार उसी समय में आती है, तो आपका सोच इसमें जाना चाहिए कि ये क्यों उसी समय में आती है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ सह्याद्री यहाँ इसी रास्ते से आती है, तो सह्याद्री क्या काम करता है,
तो ये सारे नाम में ही ये सब अर्थ और ये सब साइंसेस उसके साथ, विज्ञान उसके साथ जुड़े हैं. So we named everything so cautiously and carefully. So it was related to the Bhumi, earth. It was so well said. So our ancestors were, some people say they're not at all read. Yes, they may not have the English language. That's all, but they're all very knowledgeable. That is why you're Bharatiya. Knowledge, Bharatiya, because all of us are Bharatiya, which is what Rishi Vishwamitra says in Rigveda. We are all Bharatiya Janam, citizens of this land. So the citizen idea itself is there 7,000, 8,000 years ago. That is all. See, look at the, actually when Principal Ma'am said, no, Dr. Smita Patel said, just speak on Bharata Varsha. I said, we'll only speak on the word Bharata, we'll speak on the word Varsha. And since you're all on the eastern slope of the Sahyadri range, going all the way up to Vindhyachal, we'll speak about that word Sahyadri. Just linking three aspects, we said we can show you something for half an hour. The beauty of this land, the beauty of the knowledge of this land, knowledge of this land. So that's how it shows what all we are, isn't it? So beautiful, isn't it? So now what happens when all this rain, when this rains all over here, and then it goes, where does it go? It goes all the way up to the Himalaya. The clouds, so the clouds spreads all over, rains all over Bharat, Varsha. Then what happens? Where does it go to then? It goes all over the land. It goes finally up to, it goes to Himalaya, then finally comes up to Meghalaya. Look at this. It goes, see, you got hills here, you got hills here, hills here, hills here, hills here. So, so it comes, all the clouds circle, finally comes here. What is this called here? Meghalaya. So it comes here finally, raining all over India. It finally comes to Meghalaya, pours all the balance rains. So all the clouds come, the balance of the clouds, the raining all over India for 3 months, finally goes and congregates. The last bit is there, Meghalaya. See, that's also so correctly named. So every place Bharata is named so scientifically. That is the beauty of our land, Bharata Varsha, isn't it? So amazing to know. So like this, we have made a lot of short films, 1 minute, 2 minute, 3 minute films for all of you to watch. She'll just show you where it is so that your students can go watch it. We also got a book on this, which they cannot read at their convenience because it's in English, but we'll show you where the films are. You can easily watch and share. It's all for free, easy sharing in our YouTube channel. Just share with you a couple of places where it's available. We can share now. Yeah. This is only for students easy to understand about our Sabhyata, civilization, our land. So all you have to do is go to bharatgyan.com. It is Bharat Gyan. I'll just put it on the chat also. The link, I'll put it here. If you go to bharatgyan.com, here there is films. There is a icon here. You can click on this. You will be taken to our YouTube channel, and there you will go to the playlist. It will take you directly to the playlist page. In this page, ये पेज में अगर ये यहाँ पर काफी themes के order से काफी जैसे कॉटन पे, एजुकेशन पे, कलाचार, सरस्वती नदी, ऐसे हर different topics पे films हैं. तो आप कुल मिला के कुछ एटलीस्ट 500 odd numbers हैं. और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक है भारत, that is India. तो ये सारे फिल्म्स जो हमने आपको दिखाया, हमने सिर्फ थोड़ा ही दिखाया आपको, और हैं बहुत. इधर आप देख पाओगे. इधर ये वर्षा कम्स टू इंडिया एवरी ईयर, ये सब इधर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. और इसके अलावा भी और है, एस्ट्रोनॉमी पर है, अमेजिंग इंडिया पे है, नोइंग न्यू इंडिया. ये सब बस 1-2 मिनट के फिल्म्स हैं. तो आप ये सब देख सकते. क्रिएशन, सृष्टि विज्ञान पे है. तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फिल्म्स हैं जो आप देख के आप एंजॉय कर सकते हैं. बट द फैक्ट इज, आपको ये नहीं भूलना होगा चाहिए कि हम भारतवर्ष हैं और पुण्य भूमि है.
ये भारत के नाम के पीछे बहुत सारा, दोनों भारत और इंडिया। भारत क्या बताता है? भारत ये बताता है कि हमारे गुण क्या हैं। हम नॉलेज में रस रखने वाले लोग हैं। हमारी भूमि जो है उसमें बहुत, दोनों सूरज की किरण और वर्षा दोनों गिरती है, इसलिए हम में इतनी ताकत है कि हम अच्छा प्रोडक्शन बनाए, शक्ति है। आप और रूरल में है तो आप ये सब, ये दोनों का आप एंजॉय मैक्सिमम कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं इसे। तो वही है आवश्यकता, क्योंकि हमारा जीवन में जो माँ प्रकृति हमें देती है उसको प्रयोग करना, उचित रूप से प्रयोग करना। पहले अच्छा पात्र बनना कि उसे रिसीव करे और फिर उसका प्रयोग करे। तो ये भारत जो शब्द है, व्यक्ति ज्ञान लेना और उस ज्ञान का पात्र होना, क्योंकि जब हम पात्र ही हैं हम उसको रिसीव कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया ना अक्षय पात्र, वैसे हम सब उस तरह के पात्र बन सकते हैं। तो भारत नाम ये दिखाता है। और इंडिया नाम क्या दिखाता है? इंडिया नाम ये दिखाता है कि हम इसका अच्छा प्रयोग करके हम इसका हम व्यापार कर रहे थे बाकी सभ्यताओं के लिए और बाकी सभ्यताओं के साथ, और उनके लिए ये बहुत महत्व चीज थी। ये सब जो हम दे रहे थे इतने महत्व चीजें थी कि वे सब लोग भारत की ओर देख रहे थे। वो उनको सब ये चीज, और वो भारत के साथ रिश्ता रखना चाहते थे। वो भारत को अपने गुरु के रूप में देख रहे थे। तो इतना महत्व था भारत दुनिया में कि उनके लिए वो भारत का नाम इंडिया रख दिया, क्योंकि वो सिंध की ओर से आ रहे थे तो उन्होंने सिंध, वहां से हिंद, इंडिया ऐसे नाम दे दिया। तो ये नाम इंडिया भारत का जो महत्व है विश्व में उसको दिखाता है। तो भारत नाम हमारा गुण दिखाता है, हमारा ये जो पुण्य का हमें वो मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वो दिखाता है। और इंडिया जो नाम है हमारी महत्वता जो विश्व के लिए वो दिखाता है। दोनों इंपॉर्टेंट और दोनों को हमें एंजॉय करना चाहिए। So thank you so much to Principal Dr. Smita Deshmukh for giving us this opportunity to make a very brief presentation, because she said about 30 plus minutes. I think we have crossed about 35 plus minutes. Of course, there's a lot more we can talk. I'm sure there will be more opportunities to interact with all the interested students. Always we are available to share knowledge. Yes, ma'am. Certainly, sir. Thank you. Thank you so much, sir. क्या कहे कि ज्ञान की वर्षा आपने बरसाई है, sir. Actually, in which way? Just were to look at all those things very positively and with open mind. Scientific temper भी है, geographical outlook भी है, historical outlook है, अध्यात्म का भी है, हर तरीके से, that means in every way 365 degrees just to look at Bharat. In which way? Just I think to sum up all those things, मैं तो इतना ही कहूंगी कि मातोश्री विमलाबाई देशमुख जो महाविद्यालय जो हमारे श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी का है, यहाँ के जिनके नाम से है ना, तो उन्होंने भी एक ऐसी नींव समाज में रखने की कोशिश की कि हर महिलाओं को अपने उत्कर्ष में एक वर्षा नाम क्यों है, सोच तो आनी चाहिए। भारतवर्ष नाम क्यों है, थोड़ा सोचना तो चाहिए। उसके थोड़ा सोचने के साथ साथ उसका शोध भी करना चाहिए, वह कैसा है। और इसके सहारे हम भारतीय परंपरा की भी बात यदि करते हैं तो भविष्य को जानकर महिलाओं को यहाँ पे बताने की बहुत कोशिश मैं करूंगी कि जैसे आपने नल दमयंती का नाम लिया है, और जैसे गार्गी, मैत्रेयी, इनकी जो नाम हम लेते हैं, ब्रह्मवादिनी है, ऋतंबरा है, फिर लोपामुद्रा है, तो लोपामुद्रा विदर्भ से है। राजमाता जिजाऊ जो फिल्म में हमने काम किया है वो भी विदर्भ से है, जो महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज है। और अभी ये क्यों मैं सामने रख रही हूँ कि भारतीय परंपरा के जो ये मोती है जो हम बिरोए जा रहे हैं। आपसे वर्षा से हम बात की, अभी पुरान काल से आज तक अमरावती आप यहाँ पे आ चुके हैं। अमरावती था, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा है, शैक्षणिक है, कृषि है, हर एक क्षेत्र में अपना एक स्थान है अमरावती।
रूरल और ट्राइबल एरिया यानी कि वनवासी भी एरिया यहाँ पे, जैसे आपने कल कहा, तो ट्राइबल हम नहीं कहेंगे, हम वनवासी जो एरिया हम कहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऐसा आपने हमें बताया। और ये जो स्थान आज जो 12वीं सदी से जैसे प्राकृत यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक चक्रधर स्वामी जी यहाँ पे हो चुके हैं। तो उन्होंने भी अपनी जो भाषा के साथ जो भी साहित्य अपने सामने जो रखा है, यहाँ पे गाड़गे बाबा तुगड़ू जी महाराज के जो ज्ञान परंपरा जो उन्नत करने की जी ये भूमि जो आपके यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और एक बात और मैं दोहराना यहाँ पे चाहूंगी, इस बहाने हम अपने भारतीयत्व, हम भारतीय है, भारतीय विचार है, भारतीय परंपरा है, और उसके साथ हमारा अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सत्यता, विनम्रता, इन सब मूल्यों पर जो इन भागदौड़ की जो जिंदगी हमारी चल रही है, इस जीवन शैली में एक संतुलन रखने के लिए स्वयं हो, अपना परिवार हो या अपना समाज हो, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य जो पूरा करने हेतु जो शिक्षा प्रणाली हम अपनाने जा रहे हैं, अपना उत्तरदायित्व है कि इस शिक्षा प्रणाली में हमारा इंडियन इथॉस, कल्चर, ये जो बात हम रख रहे हैं सब हमारे बच्चों के सामने, तो शिक्षक गणों का इस बहाने हम स्वागत भी करेंगे, उनको और भी कुछ इनपुट्स और रिसोर्सेस हम कुछ दे पाए। आप जैसे लोगों के कारण, जैसे मैंने हरि सर से उनका परिचय जब हुआ था, चेन्नई में हुआ था, जस्ट आई वाज यूजीसी नॉमिनी में वहां पे आई थी, और जब आपने बताया तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे सर। मगर सिर्फ वीडियो बताना इतना ठीक नहीं, तो वीडियो क्यों है, उसके सामने, उसके पीछे क्या आपकी मेहनत है, संघर्ष है, और सब इनके सामने रखने के लिए वैदिक काल से लेकर आज तक जो भी एक कहानी आपने पूरी कथा, और कथा में नहीं कहूंगी क्योंकि कथा में थोड़ा माइथोलॉजिकल टच वगैरह ऐसा आ जाएगा, वो जो रियलिटी है, जो साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली आप रखना यहाँ पे चाहते हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा के जो हेतु जो योगदान आपने अपने ये वाणी के द्वारा हम सबको दिया है। क्योंकि एक बात कहूंगी कि ह्यूमैनिटीज में ये एक मांग जो होती है आजकल NEP 2020 में और कला के जरिए, कि भारत एक विकसित देश तो है ही, बनने जा रहा है, मगर एक अर्थव्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा है। तो इस गुणवत्ता, इक्विटी, इंक्लूजन जो हमने लाया है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो यहाँ पे ज्ञान की वर्षा, जो जैसे आप लोग जैसे देने वाले जो है, तो ये राष्ट्रीय नीति में सब हमारे विश्वविद्यालय, हमारी शिवाजी शिक्षण संस्था, हमारा महाविद्यालय, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य हमने रखा है। हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर, हमारे सब टीचर्स, सब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो कि किसी से भी पीछे हम खुद को नहीं मानते, क्योंकि हम भारतीय है। वर्षा तो बरसती है, सह्याद्री हमारे साथ है, हिमालय भी हमारे साथ है, और ऐसी व्यवस्था जहां सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में शिक्षार्थियों के समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा हमें देनी है, सबको हमारे भारतीय परंपरा से भी परिचित करवाना है। इसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए तो है ही, ये तो अनिवार्य है, मगर ये पूरा करने हेतु जो शिक्षक का जो दायित्व है, ये ऐसे वेबिनार के जरिए सर्टनली तो बड़े पैमाने में सबके साथ आ जाएगा और सबको सुपरिचित सब हो जाएंगे। और ये अनुसंधान एवं अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र में यदि पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन आपको देख रहा है, जैसे हम गुजर रहे हैं उस परिवर्तन से, मगर उस परिवर्तन में हम भी कुछ सक्रिय, कुछ सहभाग ले पाते हैं या नहीं, इसके लिए हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी गौरवशाली जो भी धरोहर है, तो इस आने वाली पीढ़ी के सामने रखने की हम कोशिश हमारे सब सहपाठियों के साथ हम यहाँ पे करने की तमन्ना भी रखते हैं, बात भी रखते हैं। और आप यहाँ पे आए और सही मायनों में हमें एक दिशा दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका यहाँ पे बहुत आभारी हूँ, स्वागत भी करती हूँ। और आपके सभी जो वीडियोस हैं हम बच्चों के सामने ऐसे ही प्रसारित हम कर रहे हैं, और बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा सीख देना, उनको कुछ ज्ञान देना, दिशा देना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। Thank you so much for being here. Thank you, madam. It's our honor to be with. It's our pleasure. Thank you, madam, for your
presidential speech. It was a second break due to the power failure. So we are very sorry for that. And we are very lucky that we have such a principal with us that she doesn't wait. Actually, she is so spontaneous that she doesn't need any invitation as such. She has started. Thank you very much, madam, for your speech. Really, Hari sir, Hema madam, you have given us a new dimension towards looking at our country, Bharat Varsha, and especially the concept of Varsha. We had never imagined even that the history of Varsha is like this. This is the first time actually when I talk about myself as a teacher also, I didn't know that this much of the depth it has under it. So Bharat is, and you also told us that the Bharat is the only country that is placed right in the entire globe. That is, we should all be very proud of being an Indians, Bharat Vasi. And the naming is also done so rightly. That is also a new thing for us to know and our students too. And you have given a very good message that India has so much that Prakruti ki sampada ko kaise prayog karna. That is the message which I think is very close to our heart and which these people should follow in our life. So thank you, sir. But for the formal vote of thanks, I would like to invite Mr. Sangode, sir, to propose. Are there any queries for the students who are sitting over here? There are students sitting in the hall. They are making some noise in between. It is good Varsha from their side. Thank you, madam. Yes, sir. Sangode, sir. On the occasion of the national seminar, first of all, I salute the holy memory of Dr. Bhausaheb Panjabrao Deshmukh and Matoshree Vimalabai Deshmukh on 24 January 2023, one-day national level seminar on discovery of India was held in our college. Under internal Sir Ji, discovery of Bharat and Faculty of Humanities on behalf of Matoshree Vimalabai Deshmukh College, Amravati, I thanks to Dr. D.K. Hari sir and Dr. D.K. Hema Hari madams, founder life members and manager trustee of Bharat Gyan, who entried to all of us their excellent speech and inspired this one-day national seminar. Also, I would like to express my gratitude to the respected principal, Dr. Smita Deshmukh Madam, convener of this seminar, Dr. Savita Thakare Madam, for organizing this seminar excellently. And also, I thank all the faculty members who attend the seminar, and I thank all the students who attend the first session of this one-day national seminar. At the last, with the permission of the President, declare the session closed. Thank you, madam. Thank you, sir. Namaste, sir. Definitely we'll meet in future physically